Jai Hind. This is Indresh Rao from Psych Keyword IAS. My institution is specialized for the psychology. Even we also offer other courses such as GS Foundation, CSAT, Psychology Optional, Means Plus Interview. This is my contact number, and our courses are available on Movishala platforms. My institution's code you can use PSYC 5548. So this is a basics about our system. Student, we are discussing psychology optional, and in the last two class we have discussed a few things like meaning of psychology. Second, we have discussed what is the antecedents of psychology. In a short, I have told you basic antecedents of psychology. Even I will use if in Hindi. So मनोविज्ञान का साइकोलॉजी का एक छोटा सा हिस्ट्री मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था, विच इज स्टार्टेड फ्रॉम हिपोक्रेटस एंड दैट एंड विद दैट इज structuralism. Before the structuralism, that is basic Titchener, Fechner and Helmholtz. So all these psychologists. तो इसके बीच में जो साइकोलॉजी का इतिहास है उसी को हम लोग देख रहे हैं. So student, as I told in the first two class, while you want to start your preparation, what thing you must follow before studying of any topics, you must see what question has been asked from that topics. Suppose if we are discussing the topics of antecedents of psychology, so you must see the previous year question paper. आपको मैंने बताया भी है, जब भी आप तैयारी करो तो सबसे पहला टास्क आप प्रीवियस ईयर का पेपर हर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी में या फिर अपने नोट्स में एक जगह पर रख लें, बिकॉज दैट विल गिव यू इंसाइट कि किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे गए. सो फर्स्ट थिंग इज प्रीवियस ईयर पेपर. सो विदाउट प्रीवियस ईयर पेपर इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, सो इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन गलत डायरेक्शन में जा सकती है. Second, I suggested you while you want to start your preparation, you must develop keywords. हर टॉपिक्स के कुछ कीवर्ड्स होते हैं और उस कीवर्ड्स को आप जरूर डेवलप करें. लाइक जैसे मैंने आपको बताया एंटीसीडेंट्स के कुछ कीवर्ड्स हैं, इसमें साइकोलॉजिस्ट या फिलोसफर्स नेम, एंड देन आई हैव वेल एक्सप्लेन दैट फिलोसफर्स थ्योरी. सो फिलोसफर की थ्योरी और उसके बेसिक जो वर्क हैं उसको हमने एक शॉर्टकट में तैयार कर लिया. सो इन टुडेज क्लास वी विल गो अहेड फ्रॉम देयर. एज आई टोल्ड इन द लास्ट क्लास, जिस सब्जेक्ट का, जिस देश का इतिहास जितना बड़ा होता है, उस देश, उस सब्जेक्ट की मोरलिटी उतनी बड़ी होती है, उतने ज्यादा ही वहां पर मोरल्स होते हैं. इट मीन्स इफ यू विल टेक द इंडिया, सो इंडिया हैव अ बिग हिस्ट्री. दैट हिस्ट्री इज ऑफ अराउंड 3000 ईयर्स. 3,500 साल का भारत का इतिहास है. सो आप कभी भी मेंस में आंसर लिखते होंगे, चाहे वो जीएस का हो या ऑप्शनल का हो, तो आप उसका हिस्टोरिकल रेफरेंस देते हैं. सो साइकोलॉजी में भी साइकोलॉजी का इतिहास है. इट मीन्स वाइल यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी हैव आल्सो हिस्ट्री. सो साइकोलॉजी की हिस्ट्री को अगर आप ध्यान से देखें तो बायोलॉजी से स्टार्ट होती है. व्हेन ह्यूमन बॉर्न, ह्यूमन वांट टू बिकम सिविलाइज, सो वहां से साइकोलॉजी स्टार्ट होती है. बट ऑफिशियली वी स्टार्ट आवर हिस्ट्री फ्रॉम द हिपोक्रेटस. तो हिपोक्रेटस
से लेकर के हम लोग हिस्ट्री को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. बट एज आई टोल्ड इन द लास्ट क्लास कि वाई वी वॉन्ट टू स्टार्ट टू स्टडी द एंटीसीडेंट्स और द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, वी कैन स्टडी इन 3 manners. First manner is integrated manners. Integrated manner means what was the basic sources of his psychology, history not psychology. What are the basic sources of psychology in the past? Means psychology को समझने के लिए ancient time में क्या था, then medieval time में क्या था, and then modern time में क्या है. If we study that, so this history is well considered as integrated history. Means we can study the psychology history in an integrated manner. Not only the psychology, even any subject history. And second way, we can study the history of any subject, especially I am talking about the psychology, topic wise. तो मैं थोड़े थोड़े आपको रेफरेंसेस जीएस के भी लेके चलता रहूंगा, बिकॉज आपको हेल्प करेगा. सपोज आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस लिखते हैं, आप बजटरी पॉलिसी का लिखते हैं, तो बजटरी पॉलिसी का इतिहास आपको जरूर थोड़ा सा दिमाग में रखते हैं. सेम एज इफ वी सी टॉपिक वाइज इन द psychology and basically about their history. Suppose we will take a topic of psychometrics. So psychometric की history systematically हम समझ सकते हैं. Then psychopathology, psychotherapy, cognitive psychology have their also own history. And social psychology and neuropsychology, all these, instead of that some more etc. also. Means you can study this history in a basically topic wise or topic by topic. It means then we can also study the history of psychology, how it develops in India, because we are preparing for the IAS exam. Second, even if we start from our preparation from NCERT, there is also given. तो means अगर आप antecedents of psychology prepare करना चाहते हैं, so you must be careful and you must be divide psychology basically 3 segments or history of psychology into 3 segments. That 3 segments are which? Integrated manners, topic wise, and Indian. So first of all, I will teach you integrated history of psychology. As I started in the last class, in integrated manner. That so see carefully one by one. First, Hippocatus. Hippocatus से स्टार्ट करके हमें आगे एक करके बढ़ते चले जाना. So Hippocatus said well or given the theory of basically Hammer theory. So it is Hammer theory. What is Hammer theory? According to Hippocatus, our body have certain fluids, certain liquids. That liquids decides our behavior. So here you can mention there are 4 fluids. There are 4 fluids that decides our behavior. अब 2 चीजें कर सकते हो, उस सारे फ्लूइड्स के ऊपर आप लिखना शुरू करें. और इफ यू विल राइट द नेम ऑफ 4 फ्लूइड्स, डेफिनेटली दैट विल क्रिएट्स 1 सेंटेंस. सो अवॉइड कर जाएं, स्पेशली इनटू द यूपीएससी.
in the fluid, initially, like there is mention, body fluids with behaviors, means our body fluids decides our behavior and temperaments. And psychology is subject of behaviors and mental process. So if our behavior decided by fluids, it means Hippocrates is right. Then the second thing is temperaments. Temperaments means mental process, one of the mental process, nature, mood, emotions, decided by our hummers. Example, more blood, more cheerful. It means if the blood system is good in our body, we maybe feel happy, which is proved by many other psychologists and scientists. One of them is Landsteiner. And this is also useful in understanding many disorders, especially schizophrenia. स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी में ब्लड सिस्टम को समझना जरूरी होता है, आरएच फैक्टर. सो नेक्स्ट थिंग इज biles. Bile means we have two types of biles, black biles and yellow biles. So that if the person have more black biles, the person will have melanchoic. Or if it is a yellow bile, the person will be sanguine. Sanguine means happy. And here is melanchoic means sad. Here it means happy. Here it means happy. Sorry, here is happy. Happy. So, first things about Hippocrates, you must remember these things. अब इससे ज्यादा फैक्ट्स अगर आप तैयार करते हैं, सो यूपीएससी लिखने में आपको प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा फैक्ट्स तैयार कर लेंगे, नो बेनिफिट्स. नेक्स्ट थिंग, गो टू द सेकेंड साइकोलॉजिस्ट, दैट इज Socrates. Socrates belonged to Athens. Socrates said about rationalism. If person have rationalism, he can do and judge the right things. So rationalism is important. As I have seen many UPSC aspirant, वो पढ़ते रहते हैं एक्स टॉपर की नोट्स, वाई टॉपर की नोट्स, जेड टॉपर की नोट्स, वो थोड़ी सी रेशनल नहीं होते. सर टॉपर के नोट्स पढ़ने से टॉपर नहीं बन सकते आप, और कोई बना हो तो बताइएगा. नहीं बन सकते. हाउ यू कैन बी? यू कैन बी बाय योर रेशनलिज्म. So develop your rationalism in your subject rather than any topper's note. Rationalism means see the syllabus and previous year paper. Don't go blindly to anywhere else. X professor is very good. X institution is very good. Don't do this. Follow rationalism. Rationalism means logics. Sir, in the previous class, I have well explained knowledge and understanding. If you have understanding, you can clear the exam. If you will work more than 8 hours only on the knowledge, not easy to pass, which most of the students do. Understanding करना सर, understanding करिए. अंडरस्टैंडिंग किसी की देने से नहीं आती. ये चीज सोक्रेटिस कहता है. रेशनल पावर विद इन द मैन दैट डायरेक्ट द ह्यूमन बीइंग टू
socially correct behavior. Socially correct behavior is possible by rationalism. So I hope this is sufficient. One sentence is sufficient. Remainings you should elaborate by yourself. And next is, third is Plato. Plato says about dualism. Dualism is two. What two? Body and minds. Body and minds. Two different properties. Which is, I think, nowadays everyone can understand, because some of you in the class, body is in class, but mind is somewhere else. So two different functioning are there. Body's functioning is different and mind functioning is different. And when we integrate, that is called yoga. What is yoga? Yoga means addition. What addition? Soul, body and mind. So if a person have now a lot of problems in their life, they are not able to take good decisions. They are not success in many sphere of life, like profession, family, because of they are not taking decision on the basis of the integrations or yoga. Yoga means the judgment which is taken with the help of soul, body and minds. That judgment 99% will not correct. It will not wrong. नहीं होगा गलत. क्यों नहीं होगा? बिकॉज तीनों को इंटीग्रेट करके आपने डिसीजंस लिया. Here I want to say one thing. If you are going to prepare UPSC, your soul is not allowing, mind is allowing, body is allowing. Don't do that. मत करो, कुछ और कर लो. So Hippocrates से लेके Socrates, Plato, सब के सब, all of them are genius. So Plato said the body and minds, two means body and minds, both are different properties. And later it was studied by many more psychologists. अब अगर आप सोचेंगे कि हिस्ट्री कैसे, सर हिप्पोक्रेटस की थ्योरी को well utilized by the many psychologists. Like one of them is Eysenck. Eysenck is here. And it was utilized by many other like Paul Costa. Here is Paul Costa and McCrae. Here is McCrae. So Paul Costa and McCrae, they have utilized well these theories. यहीं से एक अप्रोच डेवलप हो जाएगा, बायोलॉजिकल अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी. And Socrates said about rationalism, that is a source of basically cognitive psychology. Body and mind show different property. This is helpful to development of basically humanism, development of behavioralism, Freudism, Gestaltism, many more. And so history why? Because इन्हीं से निकल के आगे psychology आ रही है. And there are the two realms of the knowledge. There is a two source of the knowledge. One is phenomenal. Phenomenal means based on ordinary senses. Ordinary senses means by our basic sense organ. As I told many times to my student, two vibrations of thoughts. One is low vibrations, other is a high vibrations. If your mind is producing low vibrations, means basic sense organ, higher mental process reach to the good direction.
Sir, our body center is our Nabhi. This is our body center. And if you are going below that, it means you are going toward the low thoughts. Going to upsides, preparing UPSC. ऊपर उठ रहे हो. So it means high level of vibrations. Reaching to the God. Doing good task. Developing theories. It's not a low vibrations, it's a high vibrations. And here, well mentioned, phenomenal means based on ordinary senses. सर, हम अपनी जिंदगी को लाइफ में दो भाग में जीते हैं. One is based on ordinary senses. Ordinary senses. In the ordinary senses, what are there? Thirst, hunger, sleep, sex, etc. और जो कि हम अपनी जिंदगी के अराउंड 22 ईयर्स तक जीते हैं. एंड देयर इज नो एफर्ट्स, देयर इज नो नीड्स ऑफ एनी एफर्ट्स. कोई एफर्ट्स की जरूरत नहीं ऑर्डिनरी सेंसेस के लिए. और मन भी बहुत पसंद करता है इस चीज को करना. बट इफ यू वांट टू गो फॉर द हायर सेंसेस, लिविंग टुवर्ड द हायर सेंसेस, हायर की तरफ आप जाना चाहते हैं, यू नीड टू वॉच रीडिंग्स. यू नीड टू रीडिंग्स. और जैसे रीडिंग करने बैठोगे, आपका मन तुरंत कुछ ना कुछ बहाने बनाएगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क come in mind at the time of when you want to start your preparation. Because 22 years तक जिस सेंसेस के सहारे आप जियो हो, that will not easy to convert into higher. 4 घंटे आप फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारते हो, सो कभी बुरा नहीं लगता. बट आधे घंटे पढ़ते हो तो घड़ी देखते रहते, टाइम देखते रहते हो आपकी कितना बजा अभी और कितना मिनट पढ़ना. बिकॉज ऑफ हायर सेंसेस. सो हायर रिल्म ऑफ द नॉलेज कम्स थ्रू द माइंड्स, लॉजिक्स, रेशनलिज्म, क्रिटिकल थिंग्स. नॉट कम्स बाय इजी. So the high realms of the knowledge is important. So initially, अगर आप प्लेटो पढ़ें तो 2 चीजें याद रखें. पहला कि बॉडी एंड माइंड, 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज. सेकेंड, यू मस्ट रिमेंबर द थिंग्स. देर इज ही एक्सप्लेन अबाउट द 2 realms of the knowledge. One is a nomina, other is a higher. Nominal means by the sense organ. Higher means through the minds. Through the minds. Now, the next thing, Aristotle said, well, all the living beings have soul. All the living beings have soul. It means he talks about animism. He talks about all the natural things have a spirit or a living soul, reside in all natural things. सारी नेचुरल चीजों के अंदर, चाहे वो ह्यूमन हो, प्लांट हो, एनी लिविंग थिंग्स, they have soul. They have soul. And that souls are into hierarchical manner. First is vegetative soul. Vegetative means plants में जो सोल पाई जाती है. सिंपल, बहुत सिंपल. आप देखो, समझो तो कितना. मीन्स पेड़ पौधों में भी सोल पाए जाते, आत्मा पाई जाती है. सो दे कैन नरिश एंड रिप्रोड्यूस. एन एनिमल सोल. Animal soul means the second level, that is locomotion. Means they can nourish plus reproduce plus locomote. That is animal soul.
And what about the human soul? They can think, imagination, many more things also. That is basically human soul. Just imagine a rapist. छोटे छोटे बच्चों का 3 years, 4 years. So they have human soul? No. Never. Animal soul. Animal soul. Why? So just imagine what kind of sexual pleasure they can get from the 4-year to 5-year childs. Nothing. Just like a animal soul, sir. उनके अंदर तो इंसानों वाली आत्मा तो है ही नहीं, राक्षसों वाली आत्मा है. They have which kind of souls? Animal soul. And if we are human soul, definitely we think before doing any task. Before doing any task, we must think what I am doing. So that person have human soul. तो अरिस्टोटल स्पिरिट या सोल की बात करता है. 3 लेयर ऑफ सोल यानी 3 हायरार्की ऑफ सोल की बात बोलता है. वेजिटेटिव टू ह्यूमन. इट मीन्स जैसे जैसे हम ज्यादा मेच्योर होंगे, वी विल मूव टू द ह्यूमन सोल. एंड इफ यू रीड एनसीईआरटी क्लास 11th, there is clearly mentioned. Clearly what mentioned? Human have certain unique qualities. One of them is they have thinking power. Human can stand on 2 limbs. They free 2 limbs. हमने अपने 2 limbs को free कर लिया, हाथ जिसे बोल सकते हैं. By these 2 limbs we can do anything. We can ride, we can drive, we can do anything, sir. Whatever you want, you can do. एरोप्लेन भी चला सकते हैं. Because of we have free 2 limbs. But other animals have not such kind of things. So दूसरे एनिमल और हम में यही फर्क है. हम फूड अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी इकट्ठा कर सकते हैं. हम 2 लिम्स पे खड़े हो सकते हैं. हमारे हैंड्स 90 डिग्री पे, हैंड फिंगर्स और थम्स के बीच में 90 डिग्री, जो कि और सारे एनिमल में नहीं होता. इससे हम कैप्चर कर सकते हैं कोई चीज. लाइक पेन. इमेजिन करो ऐसे लिखना हो, हाउ इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. सो दैट इट इज इंपॉर्टेंट. Human have a certain good things, और उस गुड थिंग का इस्तेमाल गुड थिंग्स, गुड वर्क के लिए करें. So may I ask what is good work? That is a separate question, separate topic. So I think 4th point we have discussed. Now discuss after discussing this, right? There is next is, that is Descartes. Descartes means René Descartes. Descartes said the psychology has a long past. Psychology has a long past, but short history. Short history. And we have discussed already, Descartes has given interactive dualisms. Interactive means what? Interaction of body and minds. When they interact, just imagine, when they interact in a positive way, means they are cooperating. Imagine करो आप पढ़ाई कर रहे हो, while you are studying, your body and mind is working in a one direction. Your study will be good. किताब खोल लिया, बुक्स खुली हुई हैं, बॉडी वहां पर बैठी, माइंड कहीं और पर, समझ जाओ कहां पर. सो दैट इज एंटागोनिस्टिक्स. एंटागोनिस्टिक्स मीन्स व्हेन बॉडी एंड माइंड्स बोथ आर वर्किंग
in a different direction. And when they are cooperating, that will be produce good things. As I told yoga. And you know well, our brain understands 6 languages. 6. One of them is yoga, meditations. Yoga means meditations. Even yoga and meditations, technically both are different. But yoga, meditations, affirmations, visualizations. Why I said to you, you should must write first previous year paper and keywords, because that will help you to visualize. That will help you to visualize. So Descartes said, who is the author of the theory of reflex action. In his theory reflex action, he was predecessor of the SR theory. SR means behavioralism. So entire behavioralism produced from where? From the Descartes principle. And Descartes ignited the spirit of behavioralism, as here I mentioned, and initiates ideas and drives idea develop out of minds and develop by the application of external stimulus. You know, so he said that, well, our behavior में क्या है सर? Stimulus and response. When they are interacting, that will produce something. That will create perception. Perception will create learning. Learning will create thinking. Memories, problem solving, so many. As I told in the first class. And Descartes is a pioneer of the mechanism. Mechanism is application of the mechanistics principle to explain the psychological events and function. And he was first person to give the scientific flavor of psychology. So write this much. Only the basic things you should write in your copy. Don't write too much. But read at least once about Descartes. बट ये जितने भी लोग हैं फिलॉसफी के एंगल से भी इनको पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री के एंगल से भी पढ़ाया जाता है, तो सबके अलग अलग डायमेंशन. आई एम टॉकिंग ओनली द साइकोलॉजी डायमेंशन, नॉट एनी अदर डायमेंशन. सो द हियर नेक्स्ट थिंग, Auguste Comte, next psychologist is Auguste Comte. Auguste Comte, well, he was considered as father of sociology. And Comte what said? सर वही चीज पढ़ो, वही चीजें समझनी चाहिए जिसका कोई एग्जिस्टेंस हो, which is measurable, which can be calculated. It is well written. He rejected everything that was speculative, or inferential. He insisted that objectivity, very interesting, objectivity, or objectively observable phenomena. It means, if you will say there is a God, Comte बोलेगा कहाँ God दिखाओ तो थोड़ा मैं भी देखूं. So God को Comte एक्सेप्ट नहीं करेगा.